ये सेशन हम बाइलिंगुअल रखेंगे, इसका मतलब इंग्लिश हिंदी मिक्स रखेंगे। ठीक है, मिक्स क्यों रखेंगे? जिससे कि सबको समझ में आए। तो जो भी मैं इंग्लिश में रिपीट करूंगा वो हिंदी में भी रखूंगा और हिंदी वाली चीज इंग्लिश में भी रखूंगा। बेसिकली आपको सारी चीजें उसमें क्लियर कट दिखाई सुनाई देगी। ठीक है, आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। ये एग्जामिनेशन में 2025-26 के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, मैं कुछ ग्राउंड रूल्स आपको बताना चाहता हूँ। वो ग्राउंड रूल्स क्या होने वाले हैं? ग्राउंड रूल सिंपल है। आप ये सेशन सुनने के लिए पेन और पेपर लेके आ जाइए। पेन और पेपर अगर आपके पास होगा तो आप इंपॉर्टेंट चीजें नोट कर पाएंगे। ये पीपीटी मैं आपको इसके बाद दे दूंगा, बट ये जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ इसकी रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगी, है ना। मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। तो ये सेशन आपको लास्ट तक अटेंड करना है। इसमें बहुत सारी चीजों पे क्लैरिटी दे दूंगा। जिन बच्चों के डाउट इस सेशन में क्लियर नहीं हो पाएंगे उनके लेटर ऑन हम फोन पे भी डाउट क्लियर कर देंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा सारे डाउट्स आज के आज क्लियर करके जाऊं। ठीक है, पहली चीज, मुझे आपकी तरफ से काफी सारा रिस्पॉन्स चाहिए। ठीक है, आई नीड गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। द रीजन रिस्पॉन्स मीन्स रिस्पॉन्स ऑन द चैट बॉक्स। इफ आई से इज इट क्लियर एवरीवन, वॉट एवर ग्राउंड रूल्स आई हैव सेट, ये सब क्लियर है? इज इट क्लियर? जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स क्लियर। ठीक है, तो थोड़ा सा हम एक्टिव लर्निंग करेंगे। एक्टिव लर्निंग का मतलब होता है यहाँ मैं बोल रहा हूं और आप वहां से एक्टिवली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, सिंपल। ठीक है, clear? So Aisha Rizwan is saying that it's clear. What about others? Quickly in the chat box. I want active participation. घर पे आराम से बैठकर लेटकर नहीं सुनना है। ठीक है, टेबल कुर्सी पर बैठना है और हो सके तो कैमरा ऑन कर लेना है। कैमरा ऑन करने से क्या होगा? बिकॉज हियर आई एम टीचिंग लुकिंग एट माई सेल्फ। इफ आई लुक एट यू एंड यू विल लुक एट मी, देयर इज एन अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी जब हमारा कैमरा ऑन रहता है ना तो एक एक्टिव लर्निंग होती है कि भाई मुझे कोई देख रहा है ना। पीपल आर लुकिंग एट मी, सो आई हैव टू बी actively involved in the process. Okay, so I request everyone to switch on the camera. You can apply your virtual background or you can blur your background. There are a lot of options in the Zoom. तो पीछे कितना भी mess created हो, कहीं भी आप रूम में हो, doesn't matter. ठीक है, everyone can give a thumbs up. Okay, फटाफट कैमरे स्विच ऑन कर लेते हैं सो दैट हम हमारी लर्निंग को एक अलग स्टेज पे लेके जाएंगे। देखो ये सेशन क्लोज सेशन इसलिए रखा गया है सो दैट वी कैन हैव इंटरेक्शन। ये यूट्यूब लाइव से काफी ज्यादा डिफरेंट है। यहाँ मैं आपके सारी क्वेरीज डाउट्स और सब तरह की चीजें क्लियर करूंगा, बट पहले आप मेरी बातें सुनेंगे। ओके, फर्स्ट यू विल लिसन टू मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पीक हियर। आई विल टीच ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस एग्जामिनेशन एंड लेटर ऑन आई विल टेक डाउट्स। एवरीवन along with me here, just write yes in the chat box if it is clear. डाउट्स को हम 7:30 7:20 के बाद लेते हैं। पहले जो मैं बता रहा हूं पहले हम उसको सुन लेते हैं, बिकॉज जो आप डाउट पूछने वाले हैं हो सकता है कि वो मैं आपको इस सेशन में बताने वाला हूं। तो आप पहले से डाउट पूछेंगे तो इट विल बी लाइक अ प्रॉब्लम, अ केओस, और उसमें हम सब का डिस्टर्बेंस होगा क्योंकि लेक्चर का फ्लो अलग हो जाएगा। ठीक है बेटा, आप अपना ना एक बार रीज्वाइन कर लो तो आपको वॉइस सुनाई देगा, है ना। यू कैन रीज्वाइन इफ यू आर क्रिएटिंग एनी इशू। ठीक है, बाकियों को आवाज अच्छे से आ रही है क्योंकि सो दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट किक स्टार्ट योर यूपीएससी सीएसई प्रिपरेशन ऑफ 2025-26। नाउ दिस इज द फर्स्ट थिंग I want to prepare for UPSC, but when to start preparing for UPSC and how to prepare for UPSC. These are the two things that we are going to discuss in next 10 to 15 minutes. Now, when to start preparing for UPSC? Now, I want to understand what is your current level. Okay, so just tell me in which year you are thinking about giving UPSC examination. Like I would like to give in 2024, 2025, 2026. Just write your attempt so that I can modify my lecture accordingly. Okay, yes, 2025, 27, 24, 25, 25, 27, 26, 27. Okay, nice. Okay, so we have a bunch of people starting from 2024 to 2027, or majority are in 2025, or I can say 2026 as well. Okay, so I'll tell you the strategy which will work for all of you.
So it's not about the strategy that I will give on that particular year or I will give on that particular day. It's not about that. What we will do is we will draft a strategy that will work for everyone. Okay, is it clear? The reason is very simple, because the pathway, the process is very simple. What we need to do is just putting some things on the path, because आप खुद ही देख लीजिए, जब से आपने प्रिपरेशन शुरू की हो, थोड़ा बहुत तो सभी ने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी का बेस सभी का है, एनसीईआरटी पढ़ी आपने, बहुत जोश में थे कि लाइक इट्स लाइक मजा आएगा, यूपीएससी पढ़ेंगे, आईएएस बनेंगे, बट व्हेन यू स्टार्टेड द प्रिपरेशन यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दैट इट इज एवर वाइडनिंग, मतलब ये बढ़ते ही जा रहा है, ये सिलेबस है कि खत्म ही नहीं होता. सो यू मस्ट बी फीलिंग, एवरीवन गिव अ थम्स अप. कैमरे ऑन है, वो आप ऐसे ही दे सकते हो, सो आई कैन सी योर थम्स, है ना? यस, थैंक यू. सो सबको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये बढ़ते ही जा रहा है, ये कंसोलिडेट नहीं हो रहा. और जितने भी टॉपर्स होते हैं ना, उनका एक ही ट्रिक होती है, वो अपनी प्रिपरेशन को कंसोलिडेट कर पाते. हैव टू पुट एन एंड, बिकॉज स्काई इज द लिमिट. जो भी आसमान के नीचे है वो यूपीएससी का सिलेबस है, एज सिंपल एज दैट. तो जो भी यूपीएससी पूछ सकता है उसका कोई लिमिट नहीं है, बट हमारे पढ़ने का लिमिट है, हमारे पास टाइम की लिमिट है, हमारे पास एनर्जी की लिमिट है. ये दो चीजें हैं जो स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं. आपको बहुत सारे यूपीएससी कि जितने भी आपने वीडियोस देखे होंगे, नोट्स पढ़े होंगे, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट टाइम. सब टाइम की बात करते हैं, पर मैं यहाँ आपको एनर्जी की बात करूंगा. सो यू सेव योर टाइम. मैंने कहूंगा सेव तो करना ही है, बट यू हैव टू सेव योर एनर्जी एज वेल. ओके, एनर्जी भी सेव करनी. इंग्लिश में सब ओके है, सिंपल इंग्लिश बोलूंगा. एवरीवन इज ओके विद इंग्लिश? जस्ट गिव अ थम्स अप, बिकॉज समवन इज सेइंग please speak more in English. So I can be like 100% English, but very simple English. If you don't understand anything in English, I'll repeat that in Hindi. Just write, sir, please repeat in Hindi. I will repeat in Hindi as well. Okay. So we'll basic English, we will work. Okay. Everyone is okay with that. So we'll continue in English from here. Sir, नहीं सुन पा रही हूँ आपकी voice. बेटा आप ये दूसरे डिवाइस से ज्वाइन कर लो. You can join once again. है ना? This is how I think others are able to listen. So I think the problem is on your side, not on my side. Okay. Okay, done. So the most important thing here is the energy that I'm talking about. Okay. The reason is when to start preparing for UPSC. If you start too early, you will feel drain of energy by the time you give exam. For example, people start their preparation in 11th class. People start their like preparation from 10th class. No, it's not the right time. But you can have a thought in your mind that I have to give this exam. And that is why you can start building your foundation, not start preparing for the exam. Okay, there's a difference. So suppose you're at a very early age, you start building the foundation. Foundation कैसे बनती है? Everyone is about NCERT books. We always say NCERT books are very important. Why we say NCERT books? Because it's simple, crystal clear concepts written and simple English. So that is why NCERTs are the most important books to build the basics. But if you are giving for 2025, it means it is a high time that you should start preparing full-fledgedly for this examination. If we see timeline for the next year, suppose the exam will held approximately between May 2025 और June 2025. मई जून के बीच में ही होगा, ज्यादातर मई में ही हो रहा है आजकल. अभी से आप देखो, then you will have almost 1.5 years, or I would say 1 year plus 4 months. And this 1 year for 1 year and 4 months are, I can say it's a very fit time. I would not say you're losing time, but you will soon start losing time for the examination. And then pressure will mount on you. So from here, we will draft a strategy for 2025 first. Those who are preparing for 2024, if they have doubt, I can consult them later on. But the most important thing for this session is how to prepare for 2025. If you are for doing 2026, you just repeat the cycle once again. If you are in 2025, whatever I will tell from January 2025 to May 2025, you apply the same in 2024. Okay, everyone is okay with this strategy. So I will tell you the strategy of 12 months. You apply according to your own situation. The reason is very simple. Okay, right now we are standing in January. Today is 25th January, 6:20 p.m. We are discussing about the strategy.
For next year, you have almost 11 months, and then you have almost 5 months. So we can say 15 months you are having right now to prepare for it. 4 to 5 months optional will take. 9 months GS will take. And 1 month you leave for some, I can say, emergencies, where suppose you fall sick, or maybe for revision, or maybe for some other activity. It means this is the right time to prepare. And if this is not the right time, then obviously time will tell that this is not the right year to give attempt. And then you think, nahi, I will give in 2026. I will not give in 2025. You will never be fully ready for this examination. Okay. So first thing you write in your copy, write this heading. I want to prepare for UPSC, but you write first point. First point you write, I will never be fully prepared for this examination. If you ask any topper a day before the examination, and then you ask rank 1, Gaurav Agarwal, economics optional, rank 1 2013, is my very best friend. I asked him, a day before prelims, were you prepared, fully prepared? He said no. Before mains, he said no. Before interview, he said no. It means there's a deadline to that. You cannot stretch your preparation for unlimited or unended time. The reason is you have to put some deadline, and deadline drives decision. Okay, deadline hoti hai to decision hota hai. If I say, you tell me in which year you will prepare, or if I say at what time you will do your dinner, you will say 8 p.m. Deadline hai, deadline drives decision. You will say, I will not take dinner tonight. Okay, so first thing, have you written, I will never be fully prepared, but I will attempt the exam. लिख लिया. Second point you write, deadline drives decision. Deadline drives decision. Okay. So from today onwards, whatever you will start, like for example, if you start reading newspaper, this is a basic thing. All of you must be reading. If not reading, you should start reading newspaper. This is a high time. Next year, if you give interview in the month of December or somewhere, January, whenever you will be giving interview, they can ask last 2 years issues. Whenever you read a newspaper, put a stopwatch. Like this newspaper, I have to finish in 90 minutes. 90. 90 minutes mein hi khatam karna hai. Now, how to finish newspaper in 90 minutes? I will tell you. People say, sir, I feel like if I start reading newspaper, I should continue for 3 hours. Do you feel, everyone? Just write yes in the chat box. If you feel, if I start reading newspaper, it will take 3 hours with notes. Do you feel that? इतना बड़ा होता है वो न्यूज़पेपर. Newspaper is huge. There's so much of coverage given in that. I need energy in the chat box. Come on, yaar. You are the aspirants. You will become a future IAS officer. You should be more energetic. क्या कर रहे हो? This is my, I can say this is my 100th plus session of the same PPT. I am looking more energetic than you. Next year you have to give the exam. I cannot write on your behalf. I can just teach you. I can be a facilitator. But I cannot write exam on your behalf. Simple. रोज motivation देने आ जाऊंगा. But obviously the fire inside you, you have to generate that. You have to keep on lighting that. Okay? Yes, thank you for the good response. Okay. Now, the most important thing, what I was telling you, that newspaper takes 3 hours. This is what we feel. Why? Because we think everything is important in the newspaper. Everything is important in the newspaper. ठीक है, आज थोड़ी उंगलियां दुखा दूंगा मैं आपकी, because I will be asking again and again chat box. Because आप सो ना जाओ, ठीक है, आंखें खुली रहे, you stay awake, attentive. सर कुछ भी पूछ लेंगे, you have to type an answer. So, why we read full newspaper? Why it takes 3 hours to read a newspaper when there's nothing in the newspaper? Now, whenever you're reading in newspaper, you think that is this news
valid for next 7 days. If not, don't read. Just read the headline, sub-headline, leave it. In another session, I will tell you the newspaper and everything. But I'm just giving you a highlight in this in next 10 minutes about how to read the newspaper and how to make notes from the newspaper. The reason is very simple. When we read a newspaper, we see first page. The first page is very, very important. But first page is not important for the examination purpose. First page is important for your understanding purpose. Okay. Like all of you watch cricket? Just raise your hand. Those where cameras are on. Others, can you write? Do you watch cricket? थोड़ा बहुत भी देखते होगे इतना वर्ल्ड कप अभी अभी हुआ है काफी दुख हुआ पूरे देश को बट थोड़ा बहुत भी देखा होगा बैटिंग बॉलिंग 50 ओवर इतना पता होगा विराट कोहली को जानते होगे इतना ही क्रिकेट जानना है आपको मेरा एग्जांपल समझने के लिए In cricket, what we do is we start from over number 1 to over number 50. And we see the full match. We know everything. How many wickets, runs, boundaries, sixers, everything. But at the end of the 50 over, if I show you the highlight, what I will give you as a like a TV presenter, what I will show. Boundaries, fours and sixes, important events, a catch drop or something, or out, wickets. The simple single double I will not show. Why? Because the commentary is different. Abhi recently, 22nd of January, Prime Minister went to Ayodhya and does a lot of things. On front page, every day, the news was this. Prime Minister went to this place, then this place, he will do this, that, etc., etc. Now this was happened on 23rd morning, you got all the news, what are the dignitaries present there. Nothing important for the exam, just a commentary. You just read headlines. पता होना चाहिए अपने PM कहाँ जा रहे हैं. That's it. क्यों जा रहे हैं? Reason. That's it. Notes में नहीं लिखना है उसको. Don't have to write in notes. Okay. Prime Minister went to USA. S. Jaishankar went to Russia, meeting with President Putin, having a conversation. Next day, they have decided on these 4 or 5 pacts. The treaty is signed. Something like that. Old friendship and they have posted a photo. That's it. That's commentary. And if the commentary goes for 4 or 5 days, you will get the same content in the editorial page written by some expert. So for you, the page 1, no need to make notes. Just read it in 5 minutes. That's it. And in that, you can leave all the corporate news, all the political news, all the other kind of news which is not the part of your syllabus. Everyone clear about the first page of the newspaper? Just give me a thumbs up or write yes in the chat box. Everyone is clear about what to read in the first page of the newspaper? Yes, thank you so much. Now we'll come on to the second, third pages. All are state pages. If you follow the Hindu or Indian Express of any city, they are covering the city news. Delhi ka hoga to Delhi ka news rahega. Leave all those. Come to editorial page. Direct. On the editorial page, you will find 2 editorials on a vertical format and 1 lead editorial. And sometimes below that, you will have another editorial. Any newspaper, Vinay, I'm saying any newspaper which you prefer. Because if I'm a prime minister, I'm giving a speech, every newspaper will cover my same speech. It's just the wordings will be different. So if you're able to understand the Hindu, you read the Hindu. Because English is difficult, bit difficult in the Hindu. If you're following Indian Express, you can read Indian Express. But Indian Express writes a very simple English. So it's easy to understand. Because in Hindu, you must be searching a lot of things on Google. Bhai, iska kya term hai? Iska kya meaning hai? And while you search on Google, you distract. Because you find some other term. Then you do researching. And then we deviate from reading the newspaper to doing a Google search. That's it. So when you're reading the newspaper, write all those terms that you have to search. But after reading the newspaper. Now some students will say, okay, sir, if I do not know the meaning of that word, how will I read the newspaper? I would say newspaper is like the train is running, starting from Jammu to Kanyakumari, and you are boarding the train somewhere around Agra.
So you don't know what happened between Jammu to Agra, but you know from Agra to Gwalior to Jhansi to central India to south and then Kanyakumari. So for you, forward looking is important. In 30 days, you will get used to it. So when you sit in a moving train, you understand. When you reach, everyone is like, ये कौन नया पैसेंजर आ गया इस स्टेट से, इस स्टेशन से चढ़ के. Then you gel up with them. You understand their psychology and they start making like some kind of a networking. Newspaper reading is as simple as that. So don't worry about the past. Think about the future. In 30 days, everything will come on track. So on editorial page, you see if it is article written on suppose Gandhiji पे article है. Now it is important or not? Is it important or not? You write IMP or not IMP in the chat box. Quickly, everyone. I want answer from everyone. I want energy to be translated through the chat box towards me. Because whatever you will write here, you'll show the energy. It gives me energy and I will give you my 100 and 200%. Okay. So everyone, if any article written on Mahatma Gandhi, it is important or not? Everyone is writing important. Now I will ask, how do you know it is important? How do you know it is important? You will say, sir, it's simple. It's written in the syllabus. And then people come to me, okay, sir, tell me what are the important things in the newspaper or not. So initially I encircle कि ये news पढ़ लो. No, that's spoon feeding. Who will tell you the next newspaper? No one. So how to identify important and non-important is first to know the syllabus. Okay. So you're right, this is your homework. I will share my email ID. On that email ID, you have to send this homework of the session because it's a workshop, not a webinar or seminar. Workshop का मतलब क्या होता है? Whatever I will do, I will make you to commit that and to write it. Okay. So you write the homework in the separate page that you have to write the syllabus on pen and paper. Pen and paper. And last 3 years PYQs on pen and paper. Prelims plus mains. I know some of you must be thinking, sir, how tedious this work is, how the waste of time. No, it's not a waste of time because when you will write, you will realize, oh, this is also the part of the syllabus. And when after 4 or 5 days you will be reading the newspaper, you will remember, oh, this I have written in the syllabus. This is important. I have to read this editorial. Everyone agree with this? So team IAS Origin has given the homework in the chat box. Thank you. And you can copy paste it, or I would preferably say you write it pen and paper because your examination is in the mode of pen and paper only. Okay. Now, when you read the newspaper, read it rationally. Rationally, you understand. Rationally means emotionally connect nahi hona. What happened one day? I have given newspaper reading to a particular student in Karolbagh, Rajendra Nagar. That's the hub of UPSC. What happened then? I've given, okay, beta ye ऐसे type से newspaper पढ़ना है. Whatever I told you, I've told the same thing to him. Next day he came crying. I thought, what happened? Why is he crying? मैंने कुछ गलत बोल दिया, क्या कर दिया? He came and said to me, sir, देश की हालत बहुत खराब है. अरे मैंने कहा देश की हालत छोड़, अपनी हालत देख. You see your situation. देश की हालत देखने लायक बनने के लिए you have to be emotionally quotient, proper. Later on he became IPS. I'll not reveal the name because मैंने उसकी एक story सुनाई without his permission. But he became IPS in 2017. Punjab cadre he is serving right now. Ethics topper and sociology optional topper in that particular year. Someday I'll connect with him to all of you on Zoom. You can take guidance from him.
Okay. So you understand. Don't get emotional in the news. Yeah, this is this. No. If it's a part of the syllabus, I will read it. Suppose a good article written by some economist, written by some famous personality, and you feel, no, ये तो बहुत बड़े आदमी ने लिखा है. If it's a part of the syllabus, read it. If not, leave it. Is it clear, everyone? How to read newspaper? ठीक है. Everyone just write yes, yes, yes quickly. If it is clear, any doubt you can write in the chat box before we move on to this. Okay. Yes, thank you. Thank you for a response. Next is how to prepare for UPSC. This we will see in the slides next. Okay. So when to start preparing for UPSC? The answer is as soon as possible. If you are in a school, then you start with NCERT. But if you are in college, you should start as soon as possible by starting reading newspaper and the basic books. I've given one important point to you. Deadline drives decision. So whenever you are reading newspaper, put a deadline of 90 minutes. Everyone is having a smartphone. Those who are joining this session, they must be having a smartphone or a laptop. On that laptop, if you open Google and put a stopwatch of 90 minutes, it will show you 90 minutes. And on the basis of that, you can choose the timer of 90 minutes and start reading it. For those 90 minutes, sit in a no distraction area where no one will distract you. If you are studying at home, just say to your parents that for 90 minutes I'm not available. Don't call me unless and until there's a huge emergency. Just tell them. Put a phone on silent or airplane mode. Don't go into Googling things. Make a list separately and write those things on that particular page. After reading the newspaper for 90 minutes, go and do Google search for 15 minutes. For that Google search also, you put a stopwatch. Okay? Is it clear? When I just hold your question, you make a separate page of question answer. Okay? You write this question, Vinay, is it necessary to go to Delhi for UPSC preparation? I'll answer it last because it will deviate our direction. Okay, is it clear, Vinay? So whatever questions you are coming with in your mind, you write it in a separate page. Okay, is it clear? लास्ट में मैं सबके क्वेश्चन करूंगा, 9 बज जाए 10 बज जाए सबके क्वेश्चन आंसर करके जाऊंगा. फिर भी आपको कल भी क्वेश्चन याद आए, यू जस्ट कॉल मी, कनेक्ट विथ मी, आई आंसर योर क्वेरीज. ओके, डोंट वरी. मैं आपकी यहाँ मदद कर रहा हूँ. 100% हेल्प विथ क्लियर डायरेक्शन. Now this is the stages of the exam. Anyone who is not aware about the stages of the exam, anyone is there, just write yes if you're not aware about the stages, because this slide generally I skip those who are currently preparing, or because this is a basic thing, but since this is a session, so I have to tell. Okay, everyone is aware? ठीक है. So preliminary exam, objective type, mains exam, written, and personality test is one-to-one interview. Okay. Next we have preliminary examination. It consists of 2 papers. This is the most challenging phase of this examination. This will make and break your situation. The reason is very simple. It's not the qualifying, it's the rejection round. Okay, so in the next line you write that preliminary examination is conducted to reject candidates, not to select candidates. This will change your mentality towards this exam. Okay, you're right. This exam, preliminary examination is conducted to be reject those candidates. So you have to avoid rejection. Then you think about selection. Why I'm telling you? I'll tell you a very simple reason. Because when we think that we need to qualify this exam, what we do is we put effort to get extra marks. But when we think that this is a rejection round and we have to save our souls in order to not get rejected by UPSC, what we do is we do not take risk. And that is where a lot of people fail. They attempt extra questions in the examination.
and then they realize that negative marks actually they spoiled their preliminary exam. Okay, so this is to avoid rejection, because almost 95 to 96% people rejected in this stage only. Is it clear? It's a rejection round. You have to save it. Yes, quickly. You write thumbs up or yes, whatever you have in the chat box. Is it clear? Quickly, everyone, before I start taking names. So it consists of 100 questions of several subjects. And you can see on IAsorigin website as well. iasorigin.com is our website. You can go and check out the syllabus there. Each question 2 marks, total 200 marks. Negative marking 1/3. 3 क्वेश्चन गलत करने पे 1 नंबर कट जाएगा. सिंपल. Then next stage is the mains examination. Mains examination is very, very vital. That's why the name suggested mains. I know that a lot of information available on these papers. That's why I'm not investing my time on this. Okay. If you want me to explain more about the pattern, just tell me in the chat box. Okay. Because I want to focus more on answer writing, more on MCQ. I want to focus more on how to choose optional. Newspaper we have already covered. I will take more time on how to make notes. These are the things that I will tell you in this session. Okay, so that's why I'm running through this pattern, because this is very monotonous and everyone is aware about a lot of information already there. Now the name of this examination is mains examination. It means ये main है. Reason क्या है? Prelims rejection round. Interview is for higher rank, but mains examination will give you selection. So if you want to become IPS, IRS to IAS, you need to score good in interview. An interview can manage these things, your ranks, from 100 to maybe 50, from 50 to 25, or from 25 to top 10. But mains examination will give you the selection. Interview will never be make or break situation, never. Because if the marks in the mains examination is very less, you can score like how much good in your interview. It does not make any difference in your overall marks. So mains examination. Now, there's a trick to qualify the mains examination. There's a trick. I'll tell you. Number 1 is paper 1 essay. Okay. I'll just take the keyboard. Number 1 is essay paper. I hope that color plan is visible. If not, I'll use the pink one. Okay. प्लीज सर मैसेज पे देना, दिखाई नहीं दे रहा है. ठीक है, दिस इज नॉर्मल. दिखाई नहीं दे रहा, आप सुन लो. ठीक है. Paper 1 is essay. All the papers I've written, 9 papers you have to write in mains examination. All 250 marks except for qualifying. And all of those papers have a duration of 3 hours. It's very general. The pattern is very general. We are not discussing pattern here. Okay. है ना. अब 99 रुपीज में मैं आपके साथ पैटर्न डिस्कस करूंगा तो ये धोखा होगा आपके साथ. हियर आई विल टेल यू समथिंग वेरी डिफरेंट. यू शुड फील के 99 रुपीज देके ना मैंने 10,000 रुपए का कंटेंट लिया है. दिस इज व्हाट आई वांट यू टू फील आफ्टर 8 o'clock tonight. ओके. इज इट क्लियर? अभी तक मजा आ रहा है? एनीवन? यस. अभी तक अच्छा लग रहा है? आर यू गेटिंग सम वैल्यू? आर यू गेटिंग सम क्लैरिटी अबाउट द एग्जाम? हाउ टू अप्रोच दैट एग्जाम? जस्ट से यस और नो. सिर्फ भूमि को ही लग रहा है? ठीक है. नाइस. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेंस एग्जामिनेशन. ठीक है. देखो 99 रुपीज लेके मैं अमीर नहीं हो जाऊंगा, बट मैंने उससे आपकी सीरियसनेस ड्रॉ की है. फ्री का सेशन होता 500 1000 लोग रजिस्टर करते हैं, तो मतलब होता है अच्छा सेशन था सर, पता ही नहीं चला, ध्यान ही नहीं रहा. आज के सेशन में आप मुझसे पहले से जूम खोल के बैठे थे. ठीक है. तो पेपर 1 इज ऐसे, कंसिस्ट ऑफ 9 पेपर्स, जिसमें ऐसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है. दूसरा इंपॉर्टेंट पेपर है पेपर 5.
जिसे हम पेपर 4 भी कहते हैं, जीएस का मेंस का पेपर 5 होता है, तो हम जनरल सेंस में जीएस 4 बोलते हैं उसको। ये दो पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दीज टू पेपर्स आर वेरी वेरी वाइटल टू क्लियर द मेंस एग्जामिनेशन। व्हाई? Because it is a very small subjects or the discipline, ethics, integrity and aptitude. An essay comes from general topics. If you are reading newspaper for next 15 months, I'm sure you'll be able to write essay very well. Very well. Okay. But paper 2, GS 1, 2, 3. So GS 1, you can see you have to read full history. Full history. Geography, society, to write the paper on 250 marks. In GS2, polity, international relation, governance, 3 major subjects, or I would say 2 major subjects. Then in GS3, environment, economy, disaster management, science and tech, internal security. You can see the vastness of that. So here you have to make a strategy to give input so that you will give maximum output from the papers. The strategy our past students followed is that to score well in essay and score well in GS paper 4, ethics, integrity and aptitude, so that 500 marks you can fetch extra marks here. Because in GS 1, 2, 3, if you see the toppers from first rank to the last rank, you'll find almost average marks for everyone. For average marks. Okay. You will see average marks. So putting extra effort in reading history, putting extra effort reading polity, economy, will not fetch marks. These subjects look easy, looks exciting. Ethics looks boring. But we have a brilliant faculty who teaches ethics. She makes those stories and all everything, and you understand and implement those, integrate those case studies. So ethics is a very interesting subject. But how many of you have started your preparation by reading ethics? Just tell me here only. When you started, you're preparing for, sorry for that. No one. You must have started with Lakshmikant, Indian polity, or maybe modern history. Exciting topics. But can you imagine the size of modern history? Is huge. It requires a lot of effort, lot of chapters that you need to. So it's all about the input and output ratio. Okay. So next line you write, in the mains examination, you choose your topics which gives to get maximum output in minimum input. Now don't misinterpret me. गलत मत समझना मुझे. I'm not saying बाकी subject छोड़ देने हैं या बाकी पे ध्यान नहीं देना है. I'm not saying that. What I'm saying is give more effort on that, because that will give you more output, more result. That's the strategy that toppers are following. Okay. Then these two are qualifying paper 6 and 7, English and any Indian language. Generally people take Hindi from Hindi belt, and regional languages you can take. And then we have optional. These optionals are very, very vital, because optional is another 500 marks battle for you. So 500 for essay and ethics and 500 for 2 optional paper. How much it is? 1000 marks. So 1000 marks, if you put effort, you will get through for sure. And you will get average in GS 1, 2, 3. Things will be very smooth. Are you with me with the strategy? Just write me in the chat box, me. If you understood, are you with me in that strategy? This strategy is well tested since 2013. 10 सालों से मैं बच्चों को इसी स्ट्रैटेजी पे मेंस क्वालिफाई करवा रहा हूं. Sir, I don't understand. Aisha, what did you not understand? पूरी कहानी मैंने सुना दी. क्या समझ नहीं आया? ये मत कहना सर रिपीट.
आई एम नॉट सिंगिंग सॉन्ग, अच्छा लगा तो सर दोबारा सुनाओ, ठीक है। आस्क स्पेसिफिक व्हाट यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, आई विल टेल यू, डोंट वरी, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। सो ऑप्शनल वी विल टेक in this session approximately after 30-40 minutes. I will come on to the optional, then we'll discuss about optional, ठीक है। Okay, moving on to the next slide. Last stage, personality test, 275 marks. People generally get 180 to 220. Some people get 150, some people get 110 as well. Some people get in single digit as well. I've seen their mark sheet, single digit. मैंने कहा गए थे, जाने का मतलब ही नहीं निकला 5 नंबर लेके आने से, ठीक है। So this is a beyond stage. I think this is not the session to discuss personality test, but if you qualify this, just come to me. I'll make sure that you go through. The reason is very simple here. Your knowledge has already been tested in pre and mains. Here they will check that this XYZ person can be called as IAS officer of India. If this person will represent India at World Bank or WTO or UN, will this person be upheld the dignity of that particular position? They will check the personality. They will check another personality. If this person will not resign soon, it's a long process. Last year, I went to some advisory board that's very secretive, so I cannot tell. They asked me why people are leaving UPSC. There was a committee made कि UPSC select करता है और उसमें 50-60 resign कर देते हैं. What's their motive? You understand? So in that scenario, we realize that you have to understand in the personality test that is this person, like generally you see those who are selected in 5th, 6th attempt, they will never leave. But those who are selected in the first attempt, this is what the research said. Those who are selected in the first attempt, they take for granted this examination because they gave and they clear. Okay, so we'll come to personality test in some other day. Now, how to crack this examination? How to crack this examination? Very simple techniques I will tell you so that I will give you a different perspective here because you have studied everything. You know how to study and what to study, what not to study. सब पता है आपको because you must be aware, you must be searching, you must be listening to a lot of expert. But here in this slide, I will tell you something very different mentality which is required for this examination. Okay, are you ready? Just write ready for this. I'll give you a different picture altogether. Different picture. Okay, are you ready for that? Just write it quickly so that I feel that you are with me. Okay. So understanding the demand of the examination. Demand समझनी है. What they exactly want. Why are you giving this examination? Is it your dream or your parents' dream? If it is a borrowed dream, I would say you leave it. किसी और के सपनों को आप एफर्ट लगा के पूरा नहीं कर सकते जब तक वो सपना आपका खुद का नहीं है. Simple. So you ask after this session, do I really want to become? If the answer is yes, then you ask why. People don't know. Because my classmates are preparing, so I started preparing. Because my parents said that you have to become IAS officer. Or in India, it's one of the most important government examinations, so I started preparing. You have to understand the reason, what drives your motivation and energy for this examination. Now, understanding of the demand of the examination. Now, when you write answers for this, answer writing is the next another slide that we will discuss, but slightly we will discuss answer writing here. In answer writing, what is the most important part? That you write in a summarized way. UPSC says that whatever we are asking, give that exact answer to us. Don't go round, round, round. Is it clear with everyone? ये सबको पता है ना कि what they want is to the point answer. Now, how many of you, or obviously most of you or all of you must have written 12th board examination. If not, it was board, but 12th examination you must have passed out.
In 12th examination, if they ask something, what we used to do is we write the exact definition what they are asking. But what happened to us is when we went to the college, and in the college, those who will fill the number of pages, they will get the highest marks. Happened with you? Just say yes or no. हुआ है आपके साथ? So like 12th May, you were writing whatever they are asking, you're writing to the point. Okay. But in the college, they said, no, no, no. The weight of their copy will evaluate your marks. वो तराजू पे रखेंगे उसको कॉपी को, फिर वजन नापेंगे और उस हिसाब से देंगे कि मैंने कितनी सप्लीमेंट्री ली है, उस पे मेरे मार्क्स मिलेंगे कॉलेज में. पीपल से ना सप्लीमेंट्री सर, सप्लीमेंट्री, क्लास में एक दबदबा बन जाता है कि यार ये तो बहुत सप्लीमेंट्री ले रहा है. पीपल आर लाइक, कॉपी उठाई, टीचर ने देखा बहुत मोटी कॉपी है, ज्यादा मार्क्स. सो दैट एक्टिविटी हैम्पर्ड आर राइटिंग स्किल्स. बट अब हो गई है, क्या कर सकते हैं. मैं तो आपको कहानी बताई. इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स द सेक्टर्स फॉल्ट आई फील. बट if you will not correct that, if you will not unlearn that, that is your fault. And so you should accept that. Okay, if you are not ready to unlearn first and then learn again what you used to write in the 12th standard answer copies, that is your fault if you do not accept that. Okay. So here what you have to do, understand the process. Imagine a situation. Okay. So don't write, just listen to me carefully. And जिनके कैमरे ऑफ हो गए, I request everyone to switch on the camera to make it more interactive, because एक black नाम लिखे हुए boxes को पढ़ाने में मजा नहीं आता. So I request everyone to switch on the camera again, those who have dozed off, कि भाई थोड़ा कैमरा ऑफ करके लेट के सुन लेते हैं. देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ, वर्कशॉप है, मैं आपको भी बैठा के तो एटलीस्ट एक्सपेक्टेशन ले ही सकता हूँ. ठीक है. आई रियली अप्रिशिएट जिन्होंने कैमरा ऑन किया. ठीक है. ओके. सो व्हाट आई वाज सेइंग दैट इमेजिन दैट यू बिकम एन आईएएस ऑफिसर. इमेजिन करो, अच्छा लगेगा इमेजिन करने. नाउ यू बिकम अ कैबिनेट सेक्रेटरी. ठीक है. और मे बी नॉट कैबिनेट सेक्रेटरी, बहुत ज्यादा हो गया, वो तो बुढ़ापे तक आते हैं, प्रमोशन 58 59 पहुंच जाते तब. सपोज यू आर अ कलेक्टर. आपने कोई न्यूज आई, आपके पास रिपोर्ट आई, एंड दैट रिपोर्ट यू हैव गिवन इन 1 page टू योर सीनियर, मे बी कमिश्नर. That 1 page report that commissioner will read and give to chief secretary of a state. Chief secretary is similar to cabinet secretary. Cabinet secretary for PM is same as chief secretary for CM. That commissioner will give the half-page report to chief secretary. Chief secretary convert that half-page report into one line and will tell to chief minister. Do you understand why they are saying you have to write answers in 100 words only? Just write me in the chat box if you got the answer. Do you understand the essence of this small story? समझ में आया आपके कि क्यों ऐसा करते हैं? Why they say कि you have to write in 100 words only? काम की बात लिखो. CM और PM will not listen फालतू की बातें. मैं काफी सारे सीएम के साथ काम किया हूँ, वाज अ पार्ट ऑफ अ स्टेट नीति आयोग कमिटी एज वेल. व्हेन सीएम गोज फ्रॉम अ पोडियम टू वॉशरूम, दे गिव 4 डिसीजंस. 4 डिसीजन दे देते हैं. वी से पुअर पॉलिटिशियन, दे डोंट नो एनीथिंग. एक दिन उनकी जिंदगी जी के देखो. आई मेट अनुराग ठाकुर. सुबह 5 बजे से निकल के दिल्ली से, रात के 11:30 12 बजे फिर दिल्ली निकल के, दिन भर बाहर घूम के. हमसे पढ़ाई और आधे घंटे की फिटनेस नहीं होती. दे वर्क रियली हार्ड. एक सीएम पोडियम से उतर के वॉशरूम तक जाएगा, 4 डिसीजन देके जाएगा. कैसे देगा 4 डिसीजन? व्हेन चीफ सेक्रेटरी विल टेल इन 1 लाइन, सर दिस द प्रॉब्लम, व्हाट वी विल डू, व्हाट शुड वी डू. ही विल गिव नो, डोंट डू एनीथिंग, होल्ड ऑन फॉर टुमारो. ओके सर, डू दिस डू दैट. क्विक 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 डिसीजंस. शॉर्ट में ही होगा. इसीलिए आपको शॉर्ट में आंसर लिखना है. सबके समझ में आया? जिनने मी नहीं लिखा, प्लीज राइट इट अगेन
so that you understand. Okay, everyone is with me. So understanding the demand of the examination. What the demand of the examination is to write to the point. Okay, so from today onwards you make a habit, you build a habit. एक आदत बनानी है आज से हमको, किसकी, कि जो पूछा जाए वही बोले. If your mom or your dad is saying कि what will you eat in dinner, do not ask any question, cross question, क्या क्या बना है, क्या ऑप्शन है. No, just give your answer. I will eat this, 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 or I will not eat this, this, this. Will you go to coaching tomorrow? Will you go to study room, library? Shall we start newspaper subscription? Just to the point answers. Because it will not come in a day. It's a habit. And when you do not make this habit, it will create a problem for you. Because how much you read doesn't matter. People are reading about Swadeshi movement from Spectrum as well, from Bipin Chandra as well. No. Some topper says old NCERT is also good. So I will read from old NCERT as well. Swadeshi movement, all the points will be similar. You will find one extra point in every book. That's for sure. मैंने सारी पढ़ी है इसलिए आपको बता रहा हूँ. आप भी पढ़ के देखना. You'll find one extra point in other books. So is there a point of reading the same content again and again? The answer is no. Some of the factual information is good in Spectrum Modern History. Bipin Chandra will tell you the story. How many of you watch movies? Watch movies means once in a month is like movie lover. Or 2 movie in a year is also, we can say, people watch movie. एक साल में एक देखिए तो movie तो देखते. Just type yes or no. Do you watch movies? I'll give you another example. Yes. Okay. So before movie, what we do is we open YouTube and watch trailer. कि भाई कैसा आया है, movie तो देखें. So you watch trailer and you enjoy. But in the trailer, you are not able to connect anything. एक सीन यहाँ से आया बहुत fast and everything just go. Wow, अच्छी movie थी. अटल अभी मूवी आई है, मैंने तो नहीं देखी, आपने देखी है. बट ट्रेलर देख के लगा हाँ, कभी ये कभी वो. यस, इट्स अ गुड मूवी टू वॉच. बट व्हेन यू वॉच मूवी, यू विल कनेक्ट ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द ट्रेलर. अरे हाँ, ये ट्रेलर में था सीन. उनका एक फेमस डायलॉग है ना, ये देश रहना चाहिए, पार्टीज आएंगी जाएंगी, समथिंग लाइक दैट. सबने सुना हो. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दैट? ट्रेलर इज हार्ड टू रिमेंबर. But when you watch the full movie and come back home and watch the trailer once again, you will remember 90% of the trailer. Type agree, those who agree with me. If not agree, do it and then agree with me. Okay, you have no other option. Do you agree? So if you are reading from a book like Spectrum, I'm not saying book is bad. No. Book is not bad, but book is more factual. If you do not read Bipin Chandra, it's like without watching movie, trying to remember the trailer, which is impossible to recall and reproduce in the exam. लूसेंट जी के देखिए सबने, लूसेंट जी के आती है येलो कलर की. उसके पहले पेज पे इतनी इंफॉर्मेशन है. स्टार्ट्स फ्रॉम हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, इंडस वैली सिविलाइजेशन. पहले पेज पे इतनी इंफॉर्मेशन है, पूरा दिन लग जाएगा याद करने. But when you read ancient history from R.S. Sharma, you will enjoy the history. So I would request all of you to write this in your copy, that read full topic always from one source, and from other sources you add the extra things in your notes. I'll tell you how to make notes. Okay. So you write in your copy that I need to refer one topic from one source with full story. And then I will add extra points from other sources. I'm not saying that other sources do not refer. No. Other sources are also important.
Other sources are also important, but other sources are important only for extra points. So spectrum is good, but when you read Bipin Chandra, then spectrum is good. So read good textbooks. That will help you. But I'll tell you how to read books as well. Not from cover to cover. स्कूल नहीं है 7th क्लास सिलेबस गिवन बुक्स गिवन पूरा पढ़ लो बेटा नो इफ यू अप्लाई द सेम टेक्नोलॉजी हियर you will not left with any time. Okay. Sir, can you repeat please? What exactly you want me to repeat? Please बताएं. What exactly you want me to repeat? I've given like 10-minute speech on this. Next, proper guidance to start your preparation. This is very, very important. Now, सबने क्रिकेट देखा था, एग्जाम्पल दिया था, सबने हाँ कहा था. Now people say कि सर हम तो सेल्फ स्टडी करेंगे, हमें किसी की जरूरत ही नहीं. आप में से कितने लोगों ने ऐसा सुना है या कितने लोग ऐसा सोचते हैं? मैं आंसर नहीं मांगूंगा, बट आप खुद से सोचना. You listen. How many of you think that I don't need any guidance? If you have a 5-year plan, you don't need any guidance. Why you need guidance is to get the right way. Suppose I start walking in this direction, then I realize, no, this is the wrong way. I need to go in this direction. So the time that I invested from going there to coming back and then finding another way and then going and there, maybe going and then come back or maybe in some other direction, that will lose your motivation in time. I'll ask a very simple question. You must be playing cricket in your gully, मोहल्ला, और नहीं भी खेला है तो देखा होगा कॉलोनी के बच्चे खेलते रहते हैं क्रिकेट, देखा होगा सभी ने. अब आप मुझे बताओ, द पर्सन हु इज प्लेइंग इन गली क्रिकेट, डू यू थिंक ही नीड अ कोच? और अ पर्सन प्लेइंग लाइक अ विराट कोहली, ही नीड अ कोच. किसको कोच की जरूरत है? विराट कोहली को कोच की जरूरत है आपको लगता है कि राहुल द्रविड़ को सिखाता है वो बैट्स कैसे पकड़ना है? तो जो गली में क्रिकेट खेल रहा है उसको कोच नहीं रहता. कोच रहता है विराट कोहली को, जिसको पूरे दुनिया भर में इतना नाम है, पर उसको कोच की जरूरत है. क्यों जरूरत है कोच की? द रीजन इज द लेवल ऑफ गेम इज वेरी डिफरेंट. इज द हाईएस्ट लेवल ही इज प्लेइंग. सो यूपीएससी इज द हाईएस्ट लेवल एग्जामिनेशन. गली क्रिकेट में आप हारो जीतो डजेंट मैटर. कल मैं भी गया था बॉक्स क्रिकेट, पहले मैच में आउट हो गए, आखिरी में छक्के वक्के मारे, क्या हो गया? खुद के रन तक याद नहीं है. घर वालों ने नहीं पूछा बेटा क्या हुआ मैच का, टीवी पे टेलीकास्ट नहीं हुआ. कोच की जरूरत जिसको है जो बड़ा गेम खेल रहा है. आप अगर सोचते हो कि यूपीएससी एक बड़ा गेम है आपके लिए, आपको कोच की जरूरत है. आपको मेरी जरूरत है, किसी और की जरूरत है, टॉपर की जरूरत है, इट्स योर चॉइस. बट आपको कोच की जरूरत है, ये मैं आपकी आंखें खोल रहा हूं. रीजन सिंपल है, टॉपर भी सब जगह से गाइडेंस लेते हैं, पर आजकल टॉपर के साथ क्या हो रहा है, दे बिकम सेलिब्रिटी. तो जब तक उनको उनकी कोचिंग या कोई कांटेक्ट नहीं करता है कि बेटा यहाँ स्पीच देने आना है, सर वो मेरे को ना मसूरी में ना कोट सूट पहनना है, उनने बोला है, तो उसके पैसे तो है नहीं मेरे पास, मैं तो सब कोचिंग में दे दी. बोले आजा बेटा तेरे को इतने पैसे देंगे, तो स्पीच देना, हमारी कोचिंग का नाम लेना. तो जब तक मीडिया पहले पहुंच जाती है, कोचिंग बाद में पहुंचती है. सच्चाई बता रहा हूं आपको. मीडिया पहले पहुंचे तो बोले नहीं मैंने तो कहीं से प्रिपेयर नहीं किया, मैं तो खुद से पढ़ा, इंटरनेट से पढ़ लिया, बुक से पढ़ लिया, खुद से पढ़ा. आंसर कौन चेक करता था बेटा तुम्हारे? मैं खुद ही कर लेता था सर. अरे आप यूपीएससी में काम करते थे. ऐसा नहीं होता है. यू हैव टू अंडरस्टैंड. सच्चाई समझनी होगी. सच बोलने से नहीं डर. सिंपल है. तो रीजन क्या है? डू नॉट ट्रस्ट टॉपर्स ब्लाइंडली. आई एम नॉट सेइंग डोंट ट्रस्ट. एक और चीज बताता हूँ टॉपर की, मैं खुद जानता हूँ ऐसे बहुत सारे टॉपर्स. मैं नहीं बोला उनको इधर से पढ़ लो, उधर से जुगाड़ से पढ़ लो, हमारे आईएस ओरिजिन के स्टडी मटेरियल से पढ़ लो. जरूरत ही नहीं है कुछ करने की. क्यों? क्योंकि हैव टू राइट 100 वर्ड्स. व्हाई टू रीड 5000 वर्ड्स? ऑनेस्टली बताओ,
You have to write 100 words on Swadeshi movement. Why to read 1000 words on that, 5000 words on that? भाई 100 लिखना है तो 200 300 500 पढ़ लूं मैं 1000 वर्ड्स क्यों पढ़ूं, अपना टाइम वेस्ट करूं? स्वदेशी मूवमेंट से कैसा भी क्वेश्चन आएगा, मेरे पास 500 वर्ड्स के नोट्स हैं, आई विल बी एबल टू मैनेज। डीमेरिट्स पूछेंगे, मेरिट्स पूछेंगे, रीजंस पूछेंगे, सेलेंट फीचर पूछेंगे, सब लिख लिया मैंने। एक पेज में मेरे नोट्स बन गए, 2 पेज में बन गए मैक्सिमम। आई एम डन विद दैट, व्हाई शुड आई रीड? देन दे आस्क्ड टॉपर, सर आपने क्या पढ़ा? बोले यार मैंने तो बहुत जुगाड़ से पढ़ा था, मीडिया में बोलूंगा कि यार मैंने तो कोई किताब ही नहीं पढ़ी, वो सोचेंगे तुक्के में हो गया इसका। सो व्हाट दे डू इज दे टेक आउट अ लिस्ट, ये बुक्स के लिए है ना, आई रेड दिस टॉपिक फ्रॉम दैट बुक, दिस टॉपिक फ्रॉम दैट बुक। यू मस्ट बी फीलिंग कि एक बुक तो खत्म नहीं हो रही, एक बुक तो पढ़ी नहीं जा रही, ये 4 4 पढ़ के एग्जाम निकल रहे हैं। मार्स से आए हैं क्या? यू मस्ट बी फीलिंग ना भाई, न्यूज़पेपर पढ़ूं तो ये छूट जाता है, आंसर राइटिंग करूं तो याद नहीं आता कुछ। उनको भी सेम चलता, एग्जैक्टली सेम थिंग दैट दे आर फेसिंग। बट व्हेन दे बिकम टॉपर दे थिंक कि भाई अगर मैं ऐसा बोल दूंगा कि मैंने तो ना यार कोचिंग के नोट से ही पढ़ लिया, मैं तो कोचिंग के नोट से पढ़ लिया, तो वो बोलेंगे यार कर है। आयशा मैंने यही एग्जाम्पल बताया व्हाई दे मिस गाइड। द रीजन इज वेरी सिंपल, अगर मेरा हो गया, मैंने बोला मैं तो कोचिंग के नोट से पढ़ लिया, इधर उधर से पढ़ लिया, हो गया मेरा, तो पीपल से तुक्के में हो गया, इसको पता ही नहीं है। सो दे थिंक कि यार मैंने तो मेहनत से ये चीज अचीव की है। वो मेहनत कहाँ से दिखेगी अगर मैंने बोल दिया कि मैंने एक ही किताब से पढ़ के निकाल लिया, या मैं विकिपीडिया से पढ़ के निकाल लिया हूँ? डू यू एग्री विथ मी? द सेम सिचुएशन यू आर फेसिंग, शॉर्टेज ऑफ टाइम, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये पढ़ूं कि वो पढ़ूं, याद कुछ रह रही ना, कल का पढ़ा हुआ आज, रिवीजन भी करना है मुझे, आंसर राइटिंग भी लिखनी है, क्लास भी अटेंड करना है, मॉक टेस्ट भी देने हैं। डू यू थिंक यू हैव टाइम? द आंसर इज नो। सो अदर person are also struggling with the same thing. So why they misguide, it does not, एक मार्केट में ट्रेंड बन गया है, पर मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, बिकॉज आई नो पीपल एक दिन पहले फोन करते हैं, सर हालत खराब हो रही है। मैंने कहा कितनी भी हालत खराब हो, एग्जाम देना है, क्लियर करके आ गए। मैं बोल देता नहीं जा बेटा, घबरा रहा है, मत अटेम्प्ट वेस्ट मत कर। अरे किसके लिए बचाओगे अटेम्प्ट? कोई वो ठप्पा अलग से थोड़ा ना लगेगा कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट हुआ था, फर्स्ट अटेम्प्ट दूंगा ही 5 साल बाद। नहीं भाई, अटेम्प्ट दो। जनरल कैटेगरी में 6 अटेम्प्ट हैं, 6 अटेम्प्ट मीन्स 7 years ऑफ प्रिपरेशन। इन 7 years इफ यू गिव टू समवन, तो या तो आप धोखे में हो, क्योंकि होना हो तो 5 में 4 में हो जाएगा, 7वें तक लगे हो मुश्किल है, यू नॉट एबल टू डिसाइड। बाउंड्री पे हो तो देते जाओ अटेम्प्ट। अब कट ऑफ जा रहा है 105 प्रीलिम्स का, हमारे आ रहा है 50। ठीक है, नेक्स्ट बार हमने प्रीलिम्स दिया 70 आए, हाँ ठीक है, ग्रोथ दिखी, फिर से पढ़ेंगे। फिर ग्रोथ दिखी, हाँ भाई तीसरे अटेम्प्ट में तो कट ऑफ पार कर जाएंगे। जो बोलते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, वो पहले 3 साल पहले से पढ़ रहे होते हैं, तो टाइम उतना लगता है। ये रियलिटी में आपको बता रहा हूं, यू शुड कम्युनिकेट विथ योर पेरेंट्स एज वेल, सो दैट दे विल back you in your journey, otherwise there will be an extra pressure from outside, क्योंकि एग्जाम तो वैसे इनसाइड से बहुत प्रेशर दे रहा है। तो उनको पहले ही कम्युनिकेट कर देना, 3 साल का तो इंतजाम रखो, 1 साल मेरी तैयारी का, 1 साल एग्जाम का, और 1 साल कुछ ऊंच नीच हो गई तो। सच्चाई बता रहा हूँ, मोटिवेट नहीं, मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, सच बताऊंगा आपको। इफ यू थिंक नहीं यार पहले अटेम्प्ट में सब हो जाना चाहिए, नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। टेक्स टाइम, सिलेबस एक बार पढ़ने में 1 साल लग जाता। सो स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम टुडे, नो वन विल टेल कि आज आज नारियल फोड़ते हैं, आज से स्टार्ट करते हैं, नो। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट्स। देखो नॉलेज तो इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टूड है। इफ यू डोंट नो द फीचर्स, इफ यू डोंट नो द नेशनल मूवमेंट्स, if you don't know the articles, if you don't know the fundamental rights, it will be a challenge. So like you go into the kitchen and you have all the ingredients, you have salt, you have sugar, you have like tea, and you have a lot of masale, you have vegetables, and if you want to go to make a dish, even a Maggie, those who don't know how to cook including me, there's some kind of a chronology of it.
क्रोनोलॉजी, कि कब क्या चीज डलेगी कढ़ाई में, सब्जी बनानी है तो कितना प्रोपोर्शन में बनेगी। तो नॉलेज क्या है, आपका किचन है, योर किचन, योर इंग्रेडिएंट्स, बट हियर you have to apply this in order to fetch the resources. जब आप मेंस लिखोगे ना, मैं आपको बताता हूँ कैसा फील होगा। आपको हैफेजार्ड थॉट आएंगे, जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे ना, सब जगह से थॉट आना शुरू होंगे, बट उसमें तो नहीं ऐसा लिख सकते। सो दिस ब्रेन विल वर्क एज अ फिल्टर विच विल मेक योर थॉट्स ऑर्गेनाइज। दिस इज व्हाट वी टीच टू द स्टूडेंट, हैंड होल्डिंग करके, कि नहीं यार तुम्हारे दिमाग में थॉट्स तो आ रहे हैं, बट यू आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस ऑन द पेपर। कुछ लोग होते हैं बोलने में अच्छे होते, लिखने में नहीं होते, उनको खड़ा कर दो बोलना शुरू हो जाएंगे। कुछ होंगे उनको बोल दो लिखना शुरू हो जाएंगे, बोल एक शब्द नहीं पाएंगे। सो टू अंडरस्टैंड, यह दोनों चीजें चाहिए, पहले लिखना मेंस में, फिर इंटरव्यू बोलना। ठीक है, सो नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इज ऑब्वियसली मैंडेटरी थिंग। नेक्स्ट, अप्लाइंग योर नॉलेज थ्रू सॉल्विंग वेरियस टेस्ट। नाउ जब हम पढ़ते हैं, यू मस्ट बी फीलिंग, और यू हैव फेल्ट इन द पास्ट एज वेल, जब भी हम पढ़ाई करते हैं हमको सब समझ में आता है। सपोज एक चैप्टर पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन पे आपने जैसे ही चैप्टर पढ़ा, आप अगर उस चैप्टर से मैं कुछ भी पूछूंगा आप बता पाओगे। बट द टाइम आई फ्रेम द होल कंटेंट इन टर्म्स ऑफ अ एमसीक्यू or a mains type question, you will go blank. Reason is we prepare from this side and we ignore that side. Listen carefully, this is a very important learning. I'm telling you since my last 10 years of experience, very important learning. We learn from this direction and we ignore this direction. Okay, like for example, if you see a book, a menu card, you must have seen menu card while dining in the restaurant. तो एक आध या दो मेन्यू कार्ड होते हैं, चार लोग बैठे हैं, so give to the guest or your mother father, आप देखो क्या ऑर्डर करें, and then you look the menu from the reverse side, you see a different picture. When you flip it, you will realize, okay, these are the dishes that I can eat, something like that. Suddenly picture turns 360 degree, 180 degree, I mean. The same thing when you look a topic from reading perspective and when you look a topic in a test format, it's a vast difference. Vast difference. Reason is when we read, it's like a passive thing. Okay, जो लोग जैसे कैमरा बंद करके पढ़ रहे हैं वो पैसिव है, लिखे नहीं लिखे डजेंट मैटर, बट दोज हु आर स्विचिंग ऑन द कैमरा, ठीक है, आप लोगों के लिए अप्रिसिएशन भी है, वो एक्टिव लर्निंग है। नहीं सर मेरी शक्ल देख रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं, आई कैन नॉट लाइक गो बियॉन्ड 90 डिग्री, दैट इज एक्टिव लर्निंग, दिमाग चलाना पड़ता है। सो क्वेश्चंस आर लाइक दैट। अब पीपल मेक मिस्टेक कि सर सिलेबस खत्म हुआ ना तब स्टार्ट करेंगे टेस्ट देना, अभी से क्यों टेस्ट दे, जब सिलेबस हमारा खत्म हो जाएगा तब हम टेस्ट देना शुरू करेंगे, तब हम आंसर राइटिंग शुरू करेंगे। डोंट वेट फॉर वन डे आई विल स्टार्ट, मेक इट अ डे वन। ओके, सो राइट द नेक्स्ट लाइन इन योर कॉपी, आंसर राइटिंग इज द पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, it should be done simultaneously. Right, answer writing is the part of your preparation, it should be done simultaneously. Okay, answer writing is the part of your preparation and it must be done simultaneously. Simultaneously, साथ ही साथ चले। कैसे, हिस्ट्री का एग्जांपल ले लेते हैं, उसी को कंटिन्यू करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने पढ़ लिया, सॉल्व 10-20 MCQs, write 4 or 5 mains answer on Indus Valley Civilization. You have read it, you have given MCQ test as well as the test on mains. ठीक है, mains में they do not ask political questions, so majorly it's art and culture.
So I'm just giving you a topic. You can take Buddhism, Jainism. Okay. Take a big topic, at least for a day. And suppose you are reading today, you write answer tomorrow morning. Do not write before sleeping. Answer writing must be done when you're fresh. ठीक है, ये लिख लो. जो जो चीजें मैं बीच में बोल रहा हूँ वो ना पीपीटी पे है ना मैं डिक्टेट करा रहा हूँ. इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू राइट इट एंड आई विल नॉट गिव द रिकॉर्डिंग. इज इट क्लियर एवरीवन अबाउट आंसर राइटिंग? स्टार्ट्स फ्रॉम day one, not one day I will start doing this. Just write clear in the chat box. बहुत देर से शांत है chat box. Just write it clear if it is clear. The answer writing is the part of the preparation and it must be done simultaneously. Okay? तभी इंप्रूव होगा. 4 वीक पुरानी कॉपी खुद की देखोगे बोलोगे मैं क्या लिखा था. क्योंकि कितना ही पढ़ लो आखिरी में यूपीएससी आपको बोलने का मौका तब देगा जब आप रिटर्न क्वालिफाई कर चुके होगे. तो यहां कितना ही हो डजेंट मैटर. इफ यू आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस और रिफ्लेक्ट ऑन द पेपर, योर एनर्जी इज वेस्ट. सिंपल. So if you are reading something and can't write, I think you should read it again. Simple. Okay, I'm repeating again. If you are reading something and can't reproduce on the paper, I think you should go back and read it again. तो हमने जो भी पढ़ा हुआ है अगर हम उसको आंसर राइटिंग में नहीं लिख पा रहे हैं तो आपको फिर से जाके पढ़ना है. इसका मतलब वो टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है. यू शुड रीड इट अगेन. ओके, नेक्स्ट. लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स एंड कीप इंप्रूविंग. बहुत लोग होते हैं टेस्ट देते हैं डिमोटिवेट हो जाते हैं. सर 10 MCQ दिए एक भी नहीं बना. अरे अच्छी बात है, आज ही पता चल गया. एग्जाम से पहले पता चलता है, एग्जाम के दिन पता चलता, कितना दुख होता है ना. जैसे आई एम अप्रोचिंग 30 years इन एज. लोगों ने कहा यार आजकल बड़े लफड़े चल रहे हैं, टेस्ट करा लो, फुल बॉडी ब्लड टेस्ट. मैंने कहा ठीक है भाई करा लो. एक मेरे से बोलता दोस्त नहीं नहीं टेस्ट मत करा, कुछ गड़बड़ निकला तब टेंशन हो जाती है. और मैंने कहा किसी दिन पता चला कि इतनी बड़ी टेंशन हो गई जो कि करेक्ट नहीं हो सकती, देन व्हाट विल आई डू? टेंशन आज होगी, कल को तो चीजें अनकंट्रोलेबल हो जाएंगी. वी कांट कंट्रोल दैट. सिंपल. तो यही आपका टेस्ट है, रेगुलर टेस्ट. दैट विल गिव यू अ पिक्चर. पहला फायदा टेस्ट देने का, you will get to know your mistakes early in the preparation. Okay, for example, I attempt too much. If I don't know the I guess still, so you have the habit of attempting more question. You have to reduce it. आता है तो करना है, नहीं आता है तो छोड़ना है. This is the first thing. क्रिकेट में होता है ना, बाउंसर आई तो लीव करनी पड़ती है, शॉट की बॉल का इंतजार करते हैं. On the same lines, you have to do this. 20 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, पहले 10 ही नहीं बने, डिमोटिवेट होकर टेस्ट रख दिया एक तरफ. अरे हो सकता है आखिरी के 10 आपके 10 के 10 बन जाए. डोंट फील डिमोटिवेटेड. सेकेंड थिंग अबाउट गिविंग टेस्ट, लिख लिया, पहले लिख लिया, अपने आप लिख लेना रनिंग नोट्स में. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ गिविंग टेस्ट, यू गेट यूज टू लूजिंग, डिफीटिंग. यू गेट यूज टू गिव टेस्ट. People run 100 meter, 400 meter. They run marathon. Usain Bolt run only for 100 meters in one Olympic every 4 years. एक मौका मिलने के लिए. Do you think how much he has like ran in the practice? प्रैक्टिस में कितना वो दौड़ा होगा कि जब वो मेन रेस दौड़ता है तो उसको वो नॉर्मल लगती है. नॉर्मल. You have to develop that fitness of giving test. The psychology. बोले हाँ टेस्ट लाओ तो देते हैं. हाँ ठीक है, इसमें अच्छे नंबर नहीं आए, 10 ही क्वेश्चन कर पाया 100 में से, कोई बात नहीं, 10 तो किया, बाकी 90 छोड़ा, माइनस तो नहीं हुआ मेरा. 10 किया, 20 और गलत हो गया, माइनस हो गया, मार्क्स ही माइनस में है. You will get to know early. Prelims is very dicey. My dear student, prelims is very dicey. लास्ट ईयर एक IPS ऑफिसर था, इस साल फिर prelims दिया, हुआ ही नहीं.
क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया, असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आ गए, आगे खुल गई, अरे ये तो पढ़ा ही नहीं था। अरे पढ़ा क्या, सेंटेंस तो क्वेश्चन में ही थे ना, नॉलेज थी, क्वेश्चन का पूछने का तरीका बदल गया। So if you're batting on Indian pitches and suddenly you go to England and will say, अरे नहीं सर बॉल बदल गई, बैट बदल गया, you have to adjust। सबके लिए हुआ है वो प्रॉब्लम, आपके अकेले के लिए नहीं हुआ है। Everyone is facing the same challenge, you have to adjust। एग्जाम के बीच में ही हालत खराब नहीं करनी। तो आईपीएस था, सिलेक्टेड था, ट्रेनिंग में इस बार प्री हुआ ही नहीं। बोला सर अब नहीं दे रहा। मैंने क्यों नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा, यू हैव टू गिव दैट। अगली बार फिर से पढ़ो, प्रिपेयर फॉर अ न्यू चैलेंज, सिंपल। ठीक है, गिव अप नहीं करना। जो गिव अप करता है उससे मेरा कांटेक्ट भी गिव अप हो जाता है, बिकॉज आई डोंट लाइक लूजर्स। नेक्स्ट, रोल ऑफ अ मेंटर, टीचर, गाइड एंड कोच। मैं आपको एग्जांपल पहले ही दे चुका हूं। मेक्स फैसिलिटेट योर प्रिपरेशन, सिंपल। कोई भी हो, टॉपर हो, भाई बहन हो, पर कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर ना हो जिसको यूपीएससी का कोई एक्सपीरियंस नहीं, डोंट टेक गाइडेंस, डोंट गिव देम सर एक आंसर इवेल्युएट कर दो। वो कॉलेज की कॉपी तरह इवेल्युएट करेंगे, अरे बोले इसमें तो तूने साफ साफ लिख दिया, एग्जाम्पल तो दिया ही नहीं, बड़ा बड़ा नहीं लिखा। तो उसी को देना जो आपकी हेल्प कर पाए। सो चूज योर मेंटर केयरफुली, ठीक है। नेक्स्ट, अप्लाइंग द लर्निंग्स टू सक्सीड इन द एग्जाम। माय डियर स्टूडेंट, एप्लीकेशन इज द ओनली थिंग। जो पढ़ा है वो अप्लाई नहीं किया, जीरो हो गया। अप्लाई कैसे करना है, रेगुलर टेस्ट देना है, रेगुलर आंसर्स लिखने हैं, मंडे टू सैटरडे पढ़ना है या मंडे टू फ्राइडे पढ़ना है, सैटरडे रिवाइज करना है, संडे को टेस्ट देना है। वीक बाय वीक अपनी परफॉर्मेंस जज करनी है। वो जज कैसे करनी है, मार्क्स से जज नहीं करनी। हमारे टेस्ट सीरीज में कितने मार्क्स आ रहे हैं डजंट मैटर, what kind of feedback that I'm getting। Suppose in that test series they have written your introduction is not up to the mark, you start very slow, in the next test again the same feedback, it means you're not improving। if they are saying that you're starting too slow, you're coming on the point too late, अब 100 words के आंसर में if you're coming on the point too late, I think there's not enough space to write in question come answer booklet। So what you have to do is to start early। So this is a feedback that you got, improve on that, don't think about marks कि यार इसमें अच्छे है अगले में और अच्छे मार्क्स आएंगे तो मैं जीत जाऊंगा। मार्क्स से कुछ नहीं होगा यहाँ, क्योंकि हम जो मार्क्स दे रहे हैं वो यूपीएससी क्या पता सेम दे, ज्यादा दे, कम दे, वी डोंट नो। मार्क्स आर लाइक क्वांटिटेटिव मेथड्स, बट इफ यू फॉलो द प्रोसेस, प्रोसेस फॉलो करोगे रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन यूपीएससी। लिखो, इसको लिखो पॉइंट को, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन यूपीएससी जर्नी। Cause and effect relationship, I'll give you the example and I'll explain, okay। Cause and effect relationship is very important in UPSC exam। Cause and effect, I'll tell you। Suppose I am fat, ठीक है, मेरा वजन ज्यादा है, मैं बड़ा हुआ हूं, मैं पतला होना चाहता हूं। अगर मैं ओवरवेट हूं तो एक कॉज है कि इफेक्ट है, चैट बॉक्स में जल्दी बताओ। इफ आई एम ओवरवेट, इट्स अ कॉज और इफेक्ट, एवरीवन इन द चैट बॉक्स। देखो यहाँ माइनस मार्किंग नहीं है तो सारे अटेम्प्ट करने हैं, जो भी मैं पूछूं यू हैव टू आंसर, ठीक है। सम ऑफ देम आर सेइंग कॉज, सम ऑफ आर सेइंग इफेक्ट, ओके। क्विकली एवरीवन, जो बच गए जल्दी जल्दी लिखो फटाफट। वी हैव ऑलमोस्ट 30 ऑड मिनट्स इन द सेशन प्लस 10 मिनट्स। बोथ कैसे हो सकता है किरण, कांट बी बोथ। यूपीएससी का आंसर नहीं है ओनली ए ओनली बी, बोथ, नीदर, इट्स नॉट लाइक दैट, यू हैव टू चूज वन। Okay, so majority of you are saying effect. The answer is effect. Yes. Why? What is the cause? I'm not doing any exercise is the cause. I'm not eating healthy food is the cause. I am the effect. Getting my point? If I am not able to reproduce in the exam paper or test series, if I'm not able to score marks in the test series, that's the effect. You have to go back and understand the cause. What's the cause?
maybe I'm not able to read properly, maybe I'm not able to revise properly, maybe I'm not able to retain properly. These are the three causes. Understand what's the cause. Maybe I am reading too fast. Sir, मैंने ना लक्ष्मीकांत खत्म कर ली. People come to me, sir, मैंने लक्ष्मीकांत खत्म कर ली. मैंने कहा बढ़िया, ऐसी दो चार और खत्म कर और फिर यूपीएससी का ड्रीम भी. क्योंकि खत्म कुछ नहीं होता, खत्म होता है अटेम्प्ट और एनर्जी. यहां सिलेबस खत्म नहीं होता माय डियर स्टूडेंट्स. दिस नॉट अ स्कूल लेवल एग्जाम कि बोर्ड से पहले बोर्ड का सिलेबस खत्म कर लिया अब एग्जाम देंगे. नो, यहाँ कुछ खत्म नहीं होता. यहाँ खत्म दो ही चीजें होती है, अटेम्प्ट एंड एनर्जी, और कुछ नहीं होता. सो ऑलवेज रिमेंबर that syllabus is ever widening, ever expanding. You just have to keep the pace. It's all about relativity. हमको एक दूसरे से आगे रहना है. हमको सारे क्वेश्चन सही करना जरूरी नहीं है. पीयर ग्रुप में आगे रहना है, दैट्स इट. आगे कैसे रहेंगे? वो मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत करेंगे. हम ज्यादा मेहनत करेंगे तो आगे रहेंगे. सिंपल. ओके, एवरीवन अग्री विद दिस? कॉज एंड इफेक्ट सबको समझ में आया? ये पूरी स्लाइड सबको समझ में आई? जस्ट राइट yes or no or give a thumbs up in the comment section quickly everyone, so that we can move forward. Okay, very nice. Now we'll move on to the prelims part. If slide is not visible, don't worry, slide मैं आपको दे दूंगा. वैसे स्लाइड पे कुछ ऐसा कुछ लिख नहीं रहा हूं. This PPT will be given to you after the session or maybe by tomorrow, जैसा हो सकेगा. Okay, so don't worry. Essential components for solving MCQ. Build a strong foundation. Why foundation is important? Because in the next slide I'll tell you the question. Foundation is important. If they will say some X is the reason for Y, you should be clear that this is not the reason. Like, why on the global map all the deserts are on the west side? In prelims, if you face the question something like that, why all the deserts are on the west side? If you see Australian coast, if you see Thar Desert in Asia, if you see Sahara Desert, Atacama Desert, why they are on the left on the map when you look at the map, or the west side? The reason is trade winds. Trade winds move from this place to this place. It means from Japan to India's direction, or from India's to Europe's direction. They move from that. They have moistures. By the time they reach to the west coast, moisture dries out. And that's why it's not enough moisture, means arid land, desert, desertification. So that's the foundation. Now you know the concept is clear. Geography ka concept clear hai. When the concept is clear, if question come from this way, that way, you'll be able to tackle it. Next, practice with PYQs. Previous year questions are the most important. UPSC gives only two things. UPSC gives only two things: syllabus and previous year question paper. And these two things for you is like a gold and diamond. Every Sunday you have to read the syllabus again, and you have to read the last 3 years PYQs, mains, prelims, both. You will always remain in direction of the preparation. Okay? So you write this. Every 7 days, I have to read the full syllabus and last 3 years previous year question paper. Last 3 years. It's not very demanding. Every Sunday you can do this activity in 1 hour. 1 घंटे में आप कर सकते हो. Okay. Next, focus on elimination. Generally, when we read MCQ, we think, okay, this is the right answer. But always think that I have to prove that this point is wrong. And you collect proof to make that point wrong. And that is where you get that elimination method. Okay? कि ये आंसर तो पक्का नहीं है. I will collect proof to make that wrong. Okay? Anjali is saying, sir, can you repeat the cause and effect relationship? Cause and effect is simple. अभी मैंने जो example दिया आपको desert का. So why desert on the west side of the coast? Is the effect or the cause? Effect. What's the cause? Because of trade winds. They carry moisture, and a lot of the moisture they dried out on almost by reaching to the western coast. तो ईस्ट में ही पूरा मॉइस्चर लग जाता है. आप देखो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न पार्ट में बहुत बारिश होती है. सब जगह आप देखना ग्रीनरी रहती है, but not on the west side. So that is cause and effect. Another example. Next,
Develop critical thinking skills. Critical thinking means if you're thinking in unidimensionally, you will never qualify prelims. Now people ask why we are studying so many subjects in UPSC, because they want multidimensional thinking. So you apply some history, apply some polity, apply some this and that. In answer writing session, I teach student for 6 hours. 6 घंटे में उनको ये पढ़ाता हूँ कि आंसर राइटिंग में सोचना कैसे. बोले सर थॉट्स नहीं आते. So I'll give you a small example to generate thoughts. Drought, सूखा सबने सुना होगा, सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट होता है. Now drought is an issue. If the question comes on drought in GS paper 3, disaster management, or maybe economy, agricultural drought, कहीं से भी आ सकता है, दोनों जगह. Now drought का क्वेश्चन है, you think from historical perspective. भाई कहाँ कहाँ हुआ जहाँ ड्रॉट पड़ी और इशू हुआ. पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, लोन वेवर क्या आएगा, पॉलिटिकल अपीजिंग. इकोनॉमिक्स, लोन वेवर होंगे तो एनपीए आएगा. साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ड्रॉट को कैसे कम करें, develop a technology so that we can save water. Geography, if you do farming, if you grow sugar cane in Vidarbha region, drought आना तय है. Social issues, farmer suicide. This is how you get points in mains. While writing mains, you get points. क्या किया मैंने, कुछ नहीं, सब्जेक्ट्स के नाम ले रहा हूं जो आपके सिलेबस में. And this is how you get points. समझ में आया सबके? Everyone, just say yes or no quickly. The example that I gave, how to like recall things. Just list of the subjects and you think continuously, you will get points. मैंने आपके सामने अभी एग्जाम्पल दिया. Nothing is written here. Okay, next. Stay updated on current affairs because prelims are all about current affairs. If they ask anything about anything in 2024, they can ask the same question, what happened in 1924. 2024 चल रहा है, 1924 में क्या हुआ था. आप बोलेगे तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है सर, करंट अफेयर से कैसे रिलेटेड है. इट्स रिलेटेड, सिंपल. 100 साल पहले आज से. ओके, सो हिस्ट्री में भी करंट. एग्जाम डे में क्या क्या करना है एमसीक्यू. टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वाइटल. Few questions are kept deliberately to waste your time. So do not invest much time on those questions and leave it. Don't take that on ego. यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, मैं करके ही रहूंगा, बट वो टाइम वेस्ट करने के लिए. नेक्स्ट, रीड द क्वेश्चन केयरफुली. समवेयर दे हैव रिटन नॉट, सो नॉट को आजकल फिर भी अंडरलाइन वो सब कर देते, बट स्टिल रीड द क्वेश्चन केयरफुली. नेक्स्ट, मार्क ओनली इफ यू आर श्योर. If you are not sure, don't mark. 50% effort can become zero very quickly. So suppose from the 4 options, you are able to eliminate 2. Now it's a probability that your answer will be corrected. Like it's like 50% of your probability that you will correct or you will choose the correct option. So eliminate from 4 to 3 to 2, and then you will realize, okay, this is the answer. Then you mark. Okay, next, stay calm and composed. घबराना नहीं है. So for that, what I do is I suggest people to reach the center at least 40 minutes before and sit on your seat at least 15 to 20 minutes before. क्यों बताता हूं. When you visit to a doctor, डॉक्टर क्या कहता है, जाओ बर्थ पे लेट जाओ, इंजेक्शन लगना है, कुछ होना है, बोले जाओ लेट जाओ अंदर बर्थ पे, मैं यहाँ बाहर खड़ा हूँ. वो अब 5-10 मिनट 20 मिनट आपके पेरेंट्स से बात करेगा, जिसके साथ भी होगा वो टाइम पास करके आएगा. आप पहले जब बर्थ पे लेटते हो, यार इंजेक्शन लगाने वाला है, क्या करने वाला है, यू विल फील एंजाइटी. पर 5-10 मिनट वेट करने के बाद यू रियलाइज कि यार अब तो आजा जल्दी, यार जाना है घर, आगे भी जाना है इधर. दे डू डेलिबरेटली टू काम योर नर्व्स. So that's the logic, same logic I'm giving to you. If you sit on the seat of your examination hall 15 to 20 minutes before, when the paper will come, you will be fully ready के पेपर दे दो यार मेरे को, जल्दी लिख के ना सिलेक्ट होना है. You will crave for the paper. पर बिल्कुल 9 बजे 10 बजे पेपर शुरू होना है और आप तभी जाके बैठो और एकदम से पेपर आया, 10-15 मिनट आपके वेस्ट हो जाएंगे. ओके, नेक्स्ट, रिव्यू योर आंसर. इफ द टाइम परफेक्ट, जीएस में हो जाता है, पेपर जल्दी हो जाता है, 45 मिनट्स 60 मिनट्स में पेपर हो जाता है. फिर आप अपने आंसर पूरे रिव्यू कर लो. रिव्यू करना जरूरी है कि कहीं गलत तो मार्क नहीं किया. कुछ लोग पहले पेपर में मार्क करते हैं, फिर रिव्यू करते हैं, फिर ओएमआर में मार्क करते हैं.
ठीक है, पर इट्स अ लॉन्ग जर्नी, ये थोड़े बाद के टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है आपके सामने, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2019 का क्वेश्चन है। एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। व्हाट द वर्ड, वन हॉर्न्ड राइनोसोरस इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, question is very simple, but here there are 2-3 keywords, or I can say one primary keyword. Can you tell me what's the one primary keyword in this question, all the three statements? क्या है वो प्राइमरी कीवर्ड हियर जो आपको ध्यान देने वाला है, जिसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है? ओके, द ओनली, ठीक है मैं मान लिया, ओनली इज अ कीवर्ड, यस। नेचुरली इज अनदर कीवर्ड, वेल डन अंजलि, आयुषी, विकास, इंडिया ओनली, यस। So Asiatic lion found in India only. Reason is आसपास ओशन है तो वो इंडिया में ही रहते। बट डबल हम्प्ड कैमल और वन हॉर्न्ड राइनोसोरस दे क्रॉस बॉर्डर्स, लैंड है, तो ये लॉजिक लगा के आप इसका ओनली वन मार्क कर सकते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑल्सो ओनली वन। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव अप्लाई दोस टेक्निक्स। नेक्स्ट इज एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ एन आंसर। आंसर का एसेंशियल कंपोनेंट कैसा होना चाहिए? सो विल टेक वन एग्जांपल फॉर मेंस एज वेल। मेंस को समझते हैं। Introduction, you can start your answer with the fact data, and I'll tell you a very simple thing. Introduction means what? Introduction means when you read the question and when examiner will read your first two lines, he or she should get an idea that you understood the question. ठीक है, again I'll repeat in Hindi. जब आप क्वेश्चन पढ़ो उसके बाद जो आप पहली 2 या 3 लाइन इंट्रोडक्शन की लिखो, उससे एग्जामिनर को यह लगना चाहिए कि हाँ इस बच्चे या बच्ची को ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया। दैट्स व्हाट इंट्रोडक्शन मीन्स। इंट्रोडक्शन डज नॉट मीन रिपीटिंग द सेंटेंसेस written in the question similar to the answer. If they will say India will become a $5 trillion economy by this, what are the impacts that you will see? Now you will see, you will write, yes, India will become a $5 trillion. You're wasting your words. No, it is already written in the question that India will become. But what exactly they're asking is what will be the impact of it. Impact kya hoga? Start writing impact. That when India will reach this mark, our per capita income will grow. Our tax revenue will grow. People's purchasing power will grow. A stock market will grow. And economy will flourish. Got it? So this is an introduction. Okay. Although I take this session in 6 hours, but in a summarized way, I'll give you the essence of it. Divide your body. So we'll talk about body introduction if we are done. Divide your body of answer at least 2 parts or more than that. Generally, what people make mistake is they write in one single paragraph the whole answer. It's not easy to read for the examiner. You have to break that at least into 3 paragraphs in one single page. More than 3 will also be appreciated, but at least 3 paragraphs must be there. Subheading paragraph, these are the things important. You have to substantiate your answer with recent examples, suggestions, way forward, and etc. Now, what is important here? If I'm saying something, I should back with some example. Back with some example means whatever I'm saying, I should back my sentences. If I say that India's GDP is growing, then I have to write data. Now, I'm not saying that you should write exact data. No. But if you are writing GDP is 15% growing, people will laugh at you. But if you write somewhere around 7%, people will accept. Examiner will accept. They are not looking for a calculator. They are looking for officers. Those who know what's going on in the surroundings. So you don't want exact figures. But we should have at least some amount of clarity or some amount of approximation on data. Is it clear, everyone? Yes. How to incorporate data into our answers. How to incorporate examples. I'll tell you a small technique. Any point you are writing,
Just go to the ministry's website, Ministry of Agriculture. What are the initiatives they have taken? Write it in your notes. The same will become example of your GS paper 3. All the Ministry of Archaeological Survey of India, the schemes they are running, replicate in your answer of history. It's very easy. They will never ask, define this scheme, what are the components of that scheme, unless and until that scheme is newly announced. If that scheme is more than 3 years old, you just write the name of the scheme and you will get marks. Because the person will think, okay, this person is aware about 360-degree surroundings. Okay, some example from newspaper. Okay, this person read newspaper as well. Oh, this person reads that XYZ report as well. No, don't have to read anything. Just read newspaper. You'll get all the reports there. According to IMF, you write. Examiner will think, oh, this person follow IMF as well. They will reward you with marks. Simple technique. In conclusion, it should be futuristic and positive ending. Now, government is looking young bureaucrats, those who will run the country. If they are pessimistic in nature, no, India will never reach $5 trillion economy very soon. It will take time. ठीक है, नहीं पहुंचेगी, जब पहुंचेगी तब तो उम्मीद दिखाओ ना. India will reach $5 trillion economy. Your words should sound optimistic. So always end your answer with some national interest whenever possible. Okay, I'm not saying हर जगह national interest लगाना है, but whenever possible national interest सबसे ऊपर रहता है. People kill people at borders. It means it is national interest above than human interest. बोले नहीं यार, तू पाकिस्तानी सोल्जर है, मैं तो नहीं मारूंगा तेरे को. अबे तुम नहीं मारोगे, वो मार देगा. So national interest is on top. So in the answer writing conclusion, it is always optimistic. If something is not happening, don't worry. Write some optimistic conclusion. ठीक है, demonetization was bad, pathetic. Even government knows कि गलत decision हो गया था. But कुछ तो positive निकला ना उसका. क्या positive निकला? People started accepting digital payments. कार्ड डिटेल शेयर करने में पहले आदमी की हालत खराब होती थी. बट आफ्टर डिमोनेटाइजेशन पीपल आर रेडी. यूपीआई रेवोल्यूशन आया. ऑल द गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव में था नहीं था, डजेंट मैटर. इट्स नॉट अ टॉपिक ऑफ डिबेट. देन कोविड केम. सो व्हेन कोविड केम, एवरीवन वाज रेडी टू एक्सेप्ट डिजिटल पेमेंट्स. फायदा हुआ ना कोविड में. आपको सामान ग्रोसरी घर पे आ जाती थी, होम डिलीवरी से आ जाती थी, इधर से आ जाती थी, उधर से आ जाती थी. ऑनलाइन पेमेंट फेल हुआ था तो हम घबरा जाते थे. अब ठीक है, 7 दिन में आ जाएगा, पैसा कहाँ जाएगा, या तो उधर जाएगा या इधर आएगा, देख लेंगे. यू आर नॉर्मल अबाउट इट. जस्ट बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइजेशन. आई नो कि डिमोनेटाइजेशन बहुत पैथेटिक डिसीजन था. किसी इकोनॉमी की लिक्विडिटी पूरा 86% आप स्ट्रेच कर लोगे तो हालत खराब होगी ही होगी. बट ठीक है, किया. हमारे हाथ में तो है नहीं. वी कांट डिबेट अबाउट इट. इफ दे विल आस्क द क्वेश्चन, दे विल नॉट श्योरली. तो इम्पैक्ट वो 2-3 साल बाद क्वेश्चन आया था मेंस में, अगर आपने देखा हो तो. डिमोनेटाइजेशन से इनडायरेक्टली रिलेटेड. ओके, सो दिस इज हाउ व्हाट यू हैव टू डू. Now we'll see the example of mains question. Okay, see carefully. मेरे साथ पढ़ना, ठीक है. To what extent did the role of moderates prepare a base for the wider freedom movement? Comment. Now in answer writing sessions we take कि comment है ना, directives जो होते हैं ना questions के, comment, discuss, narrate, critically analyze. We take what to write in those things. But here in a short example, what we will see, to what extent did the role of the moderates prepare a base for the wider freedom movement? Moderates, you understand? Everyone, just write yes in the question. Do you understand moderates, extremist, modern Indian history? Yes. Okay. Now in this question, tell me the keyword. Tell me the keyword. In prelims also there was a keyword to note. In the mains question, there's a keyword. What's the keyword? Everyone. Extent. Okay, first keyword is extent. Okay, I hope you can read this.
Again, I'm reading. To what extent did the role of the moderates prepare a base for the wider freedom movement? A base, yes. Wider freedom movement, yes. But here, base is a very important word because base will give you a direction what to write in this. So to what extent? It means they're asking extent. कहां तक ऐसा माना जा सकता है कि मॉडरेट्स ने एक बेस प्रिपेयर करके दिया था फ्रीडम मूवमेंट का? मतलब यहाँ पे मॉडरेट्स हम एनसीईआरटी की तरह हमारी तैयारी में समझ सकते हैं. ठीक है. थैंक यू टीम आईएएस ओरिजिन फॉर राइटिंग द क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स. You can read from the chat box if it's not clear. Role of the moderates prepare a base. Now, base is very important. Now, how will you write the introduction? I'll narrate the introduction for you. Okay. You can start your answer by establishing Indian National Congress by A.O. Hume, which himself a British citizen. Started Indian National Congress in 1885. And started educating the masses and the leaders. First leaders, then with the help of leaders, the masses. So education, awareness comes in. अभी हो रहा है ना वोटर. Voters are like, मैं अपना वोट कैसे दूं? Nota. Nota is winning lot of elections, if you are aware. Nota is defeating big ministers. Although we take second highest in Nota, none of the above in election. So this is how you write introduction. एग्जामिनर विल रीड द क्वेश्चन इट अंडरस्टैंड. इसको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी, इसको पता है ए ओ ह्यूम कौन है, इसको पता है कि मॉडरेट सूरत स्प्लिट तक मेनली मॉडरेट्स का ही दबदबा था. देन एक्सट्रीमिस्ट केम कि यार इतनी स्लो प्रोसेस में तो 200 साल में आज़ादी मिलेगी. वी नीड इट, वी नीड टू डू समथिंग अग्रेसिव. So they prepared a base. They gave us the platform for the extremists to perform. क्रिकेट में होता है ना, पहले बॉल स्विंग होती है, बैट्समैन आराम आराम से बैटिंग करता है, लास्ट के बैट्समैन आते हैं चौके छक्के मारते हैं. सो दे प्रिपेयर्ड अ बेस फॉर अ बैटिंग टीम to blast at the end in a T20 cricket match. Simple. So this is how you do it. You write some of the names that will become example in this answer. You'll write some of the dates that will become data in this. You'll write some incidents that will become another valuable keyword in the answer. Very important topic. How to choose an optional subject. How many of you have clear about the optional subject? Just tell me your optional in the comment section. How many of you are clear about their optional? If it is clear, write. Yagya is saying economics. I think Yagya, I know you. Yagya Sehgal, I know. A student from Ecoholics. Still confused? No, geography, history, sociology. Yes, sir. Okay. Nice, good to see you, Yagya. Okay, so you are confused. Okay. Let me show you simple how to choose it. Okay. I have a document as well. I'll share that PDF with you. How to choose optional. But here we will discuss in 5 minutes. Interest and passion. Pehla cheez. Why? The reason is very simple. Your optional subject is like your spouse. You have to live with that subject. You have to mold your thinking according to that subject. Getting my point? Because for 1 year of preparation and then 1 year of exam, at least for 2 years, that subject should keep your interest in that particular content. When we see the subject in the GS format, like a history you will see in GS, you'll look, see, wow, this is a nice subject. But when you start optional and when the mapping will come and you have to remember 450 plus locations on the map, you'll see, oh my God, 450 location you have to remember, mark it out in the mains paper. It's very difficult. When you take anthropology, okay, toppers are taking, I should take anthropology.
the toppers are taking. Maybe suppose they like anthropology, that's why they took and they topped the exam. And just because by taking inspiration from them and you take the optional, this should not be there. Okay. So it's very important to choose your optional of the interest subject. Next, subject scoreability. Although UPSC applies neutralization of the marks, like a student from mathematics optional, they can score full marks. So that evaluation has been neutralized by UPSC, but still you have to see your input and output, the effort that you put in, the output that you will get. If your optional is related to GS paper, you don't have to study GS. Like Yagya has taken economics option. Then GS paper 3, half of the paper done. 125 marks of economics done. If you've taken geography, history, GS1, half of the GS1 done, or even 40% of it. It will help you in prelims as well. So this is one of the another criteria to choose optional. Okay, I'm not demotivating to those who are taking any other subject which is not overlapping with the GS, but still you can take. If you're good in physics, I would say go with it, Vikash. Next, syllabus. You have to see the syllabus. Now, syllabus of all the optionals are like similar. If you see economics optional syllabus, it's like 3 pages, 4 pages maximum if you take a printout. But if you see history syllabus, it's quite huge. So some of the syllabus are detailed. Some of the syllabus are like not very detailed. They write one line. Like in GS also, you must have seen geography, physical geography of India. Now there's a huge topic written in one line. So like people have written 1,000 pages books on that. So you have to see how well defined it is. Next, commonality, again, the overlapping I have already explained. Length of the syllabus, how much time it will take to cover once. I say if any optional is finishing less than 5 months, if someone is committing that I will finish the optional in 3 months, no, they will just finish for the sake. I would say 4, maximum 5 months, depending on your grasping ability. Okay. So length of the syllabus also matters, how much time it will take for me to read it once. Okay. Next, sources of information and study material availability. I have one of my student, not a student, but it's like a friend and a student. He became IRS in 18. No Siddiqui naam hai. He has the Urdu optional subject. And he used to tell me कि sir, Urdu में कुछ मिलता नहीं है. When he became IRS officer, he wrote a book for Urdu optional student. Now Urdu optional student has a resource. But when he was preparing, there was like hardly any resources available. So you have to see कि भाई resource मिलेगा कि नहीं मिलेगा. So this is one thing. Like, do we have good books to prepare that optional? Do we have good test series to give? Do we have good people to guide? You have to see this. Simple. Next, background. Your background. Background matters and background does not matter. I've seen people from different background, they take economics. Even I've seen people from maths background or they are not taking maths. So it's like it depends on your background. Background helps you in terminology only. If you know the subject from your college level, you understand those terms. But let me tell you honestly, nothing from the college degree will help you in this, apart from the names and the familiarity of those terminology. That's it. So it doesn't matter what optional you are having. Doesn't matter like what kind of background that you are coming from. You can take any optional. If the background matters, people say, sir, option interview में they will ask the question कि मेरा तो डिग्री इसमें है पर मैंने ऑप्शनल क्यों लिया. तो मैंने कहा say simply why UPSC has given the option, that's why I have taken it. Simple. UPSC ने ऑप्शन दिया ना, अदरवाइज यूपीएससी बोलता नहीं जो डिग्री है वही ऑप्शन लेना है. आपने ऑप्शन क्यों दिया मुझे? You can say simply, sir, UPSC has given the option to choose any optional subject, so I have chosen this. Because in my graduation, I studied, but I was preparing for an optional and something like that. You can say your answer, whatever the reason is.
They love honesty in the interview. Okay. I hope everything is clear till this. Till now, everything is clear. Just right. Okay, guys. So this is the last thing. Persistence will get you there, but consistency will keep you there. It's a very nice quote. In the most important thing, this quote will help you in UPSC journey. It's not like you're studying for 10 hours, 12 hours, 14 hours. It's about if daily 3 hours you can give, you'll be able to qualify. Okay. So this is the last slide. Thank you so much. If you have any doubts, queries, I'm available for you. Thank you so much, everyone. Have a nice day.